वेल हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। यानी इंटरव्यू के दौरान मुश्किल सवालों का जवाब कैसे दें। Howsoever well you are prepared, there could always be some chink in your armor that can take you off guard. माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक्लीज की हील से लेके दुर्योधन की जांग तक हमारे इतिहास में, हमारे पौराणिक कथाओं में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसी फेटल फ्लॉ, एक ऐसी वीकनेस का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें दैट लेड टू देयर डाउनफॉल। सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज some of your own vulnerabilities and how you can best tackle those. So let's get started. दोस्तों, at the very onset, let me be very clear what I mean by difficult to handle questions. I don't mean difficult factual questions or questions that are worded somewhere along the lines of what is your weakness. That's a different genre of questions. उसकी बात मैं किसी और दिन करूंगा। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ मुश्किल सवालों की, तो I mean those sort of topics that touch a raw nerve for you. आपकी किसी दुखती रग को छूने वाले मुद्दे जिनसे आपको इंटरव्यूइंग पैनल आपको डिसलॉज कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस सेल्फ में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी जो इफेक्ट होती हो सवालों से। इट कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मेरे केस में डीआरडीओ के इंटरव्यू में और ESIC में द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द पैनलिस्ट हैड फॉर मी in both of those interviews was, what were you doing after graduation? For those of you who don't know my background, for about 5 years after graduating, I had been preparing for competitive exams. And for both of these interviews, I had a very different response, which I'll discuss in the video subsequently. But this was my case. It could be very different for different people. किसी के लिए ये एक distance learning की डिग्री हो सकती है जिसपे अगर if they face questions about if it is good enough or not, then they may feel dislodged. किसी के लिए mediocre marks or mediocre college or a degree that has low employability. So depending on person to person, it can be very different for very different kinds of people. But the common thread among them all is that during the interview, it dislodges you. It makes you feel vulnerable, makes you feel attacked. You get apologetic about it. So all those emotions that can emerge during that course of interview and can set you off rails, आपकी गाड़ी को पटरी से उतार सकते हैं। इस तरह के सवालों को हैंडल कैसे करना है, हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। But before we even discuss the approaches to handle such difficult questions, let me ask you, क्या ये जरूरी भी है कि हम ऐसे मुश्किल अप्रिय स्थितियों के लिए तैयार हों? जरूरी क्यों है? मतलब इंटरव्यू में ठीक है, कुछ पूछा सवाल आप नहीं जवाब दे पाए, आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो पाता है क्या? सी, आई शेयर माई ओन एग्जाम्पल। डीआरडीओ इंटरव्यू में मुझसे फर्स्ट सवाल पूछा गया कि व्हाट वर यू डूइंग फॉर दिस एंटायर टाइम पीरियड, एंड इन अ वन लाइन आंसर आई रिस्पॉन्डेड वेरी प्लेनली दैट आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम्स, and the panelist, in a very judgmental tone, or maybe it was very objective, it was my own misperception that thought that he was being judgmental. She said, for such a long period, itne lambe samay, and that in a way offended me, made me feel apologetic about my own journey. This is why you have to realize that in your subconscious self there could be multiple reasons that can make you feel small, and the other party is not at fault for this. So beforehand, it is very important to analyze your own personalities. Otherwise, your whole interview can go haywire. आपका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो एक अनप्लेजेंट सवाल से इफेक्ट हो सकता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे हिल सकता है। कॉन्फिडेंस की जरूरत क्यों है इंटरव्यू में? वेल, every good aspirant who is facing an interview is like a salesperson. You're there to sell your prospects as a candidate. And if a salesperson is not confident in his or her own product, then it's very unlikely that the deal will, be executed. So confidence बहुत ज़रूरी है. Secondly, अगर आप किसी सवाल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं तो it is quite likely that you will end up making excuses, long wandering excuses for your own failings. And you don't want to be in that kind of a spot, क्योंकि during that phase of 30-35 minutes long interview, you would want कि आपकी
जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सके. तो excuses या under preparedness for such questions can lead you down that road also. Third, if you are not prepared for such issues, then it indicates that you have certain blind spots. You are not very self-aware. आप कहीं ना कहीं rigid हैं. So it does not reflect very well on your personality. And more often than not, what I have observed is that such kind of interviews, ऐसा नहीं है कि abruptly वो सवाल अगर आप उसमें एक टफ पोजीशन में हैं तो इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन you want the interview to be about your opinions, insights, experiences. Very often during such interviews, the road that is hit after this sort of awkward moment is on factual questions, which is not the ideal kind of interview. मतलब DRDO वाले इंटरव्यू में भी उस क्वेश्चन के बाद मुझसे जनरली फैक्चुअल सवाल पूछे गए, विच इज़ नॉट वेरी बैड इन अ वे, बट उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने पॉजिटिविटी, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम को शोकेस करने का मौका कम मिलता है. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के सवालों के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें. सो लेट्स कम टू द मीट ऑफ इट. मुद्दे की बात करते हैं. वो क्या टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू टर्न द सिचुएशन इन योर फेवर. वही सवाल जो आपको इंफीरियर फील करा रहे हैं, उनको आप कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, इनकी बात करते हैं. नंबर 1, बी ऑनेस्ट एंड एक्नॉलेज, बट स्ट्रैटेजिकली. One of the aspirants that I knew was asked in his interview about the lack of hobbies in his application form. पूछा गया उससे कि आप ये किस तरह के मनुष्य हैं जिसकी कोई हॉबी नहीं है. Now this is a very head-on attack. How do you tackle it? First of all, of course, I think there should be some hobbies, but assume that you have not mentioned any hobby on your application form, और हो भी ना की, तो उस कैंडिडेट ने बहुत सरल तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि उसका बैकग्राउंड जो था डिड नॉट अलाउ हिम हिज अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स द लग्जरी टू परसू एनी हॉबी सीरियसली, एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. उसने माना कि हाँ, मतलब होना चाहिए आइडियली, लेकिन मेरे पास वो समय नहीं था, वो वक्त नहीं था कि मैं कोई भी हॉबी परस्यू कर पाऊँ, जिसके कारण से नहीं है, वो कॉलम ब्लैंक है. बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू commit some time to XYZ sort of hobbies, which is a fair enough way of tackling such questions. मुझसे ही जैसे जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे 5 साल के लिए, तो DRDO वाले इंटरव्यू में तो यार मैंने एक ही लाइन में बोल दिया कि मैं तैयारी कर रहा था, एंड नथिंग आफ्टर दैट, एंड इट एंडेड इन अ वेरी ऑकवर्ड साइलेंस आफ्टर दैट. बट ESIC के इंटरव्यू में आई reframed the whole scenario and told them, yes, it is a long period, but during that time period I was pursuing XYZ ABC sort of activities, and the advantage of using that strategy is that it gives you the tool to have the follow-up questions that you desire them to pursue. तो मैंने वहाँ पे पोइट्री की या मेरे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो इंटरेस्ट है उनकी बात करी, तो उस पर फॉलो क्वेश्चंस भी आए. सो यू कैन ऑलवेज टर्न द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. आपदा में अवसर मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो सेल्फ अवेयरनेस. स्वॉट एनालिसिस नाम का एक मैनेजमेंट टूल होता है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो आपके एनवायरनमेंट में होती हैं उनको एनालाइज करते हैं. ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी टूल है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को आंकते हैं, अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए. रीड द एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू हैव फिल्ड. एक एक पॉइंट को आप अच्छे से आत्मसात करें और उस पर जो भी पॉसिबल डिफिकल्ट सवाल बन सकते हैं उनका एक ड्राई रन करिए. फर्दर, यूज स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स टू प्रूव योर पॉइंट. डोंट गेट इनटू लॉन्ग unending abstract arguments. For example, I told my panel that while preparing for the civil service exam, I was not wasting time. At the same time, I was pursuing open mic events. I had been into different NGOs, and I was also teaching students. So I had multiple co-curricular engagements even during that time, and I cited all of those during the interview. So it's very important कि आपके पास अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपकी एग्जाम्पल्स हो.
Fifth, and I can't stress it enough, be calm, confident, and don't be over apologetic. Fear can be smelled very easily. And there's nothing that you need to be afraid of. You have to accept yourself. You have to be proud of yourself. ये कोई रोडीज का इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे आपकी बेवकूफ़ियाँ या आपकी एब्सर्डिटीज हैव अर्नड यू द राइट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द पैनल. यू हैव सर्टेन अचीवमेंट्स अंडर योर बेल्ट. आपने रिटन राउंड में अपनी अपनी काबिलियत, अपने क्वालिफिकेशंस प्रूव किए हैं. ओके, सो यू डोंट हैव टू बी, you don't have to feel underconfident. You don't have no reason to feel so. So be confident. Sixth and most importantly, you have to realize that you have to share an inspiring story through your interview. Interviews, just like any other good conversation, are storytelling. Kahani hai. You have to be the protagonist in your own story. You have to give yourself a second chance. And people love to hear good stories. Setbacks or डिफीट्स के बाद कैसे कोई दोबारा खड़ा होता है, ये सबको सुनना अच्छा लगता है. और वैसे भी अगर किसी की जर्नी पिक्चर परफेक्ट रही है, दैट डज नॉट मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट. कोई अमीर आदमी था, उसने स्कूल में भी बहुत अच्छा किया, उसकी जॉब अच्छी रही, उसकी सब कुछ पिक्चर परफेक्ट अगर होता है उसकी ज़िंदगी में, दैट डज नॉट मेक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो इट्स ओके टू हैव सेटबैक्स, बट यू हैव टू रीपैकेज, reframe the whole of your journey as something very inspiring. To conclude, I'll leave you with this quote from one of my favorite role models from the pages of history. Successes, failures, different hindrances, obstacles, these are all just fuels, potential fuels to your fire. If you are honest with yourself, know how to reframe your journey, reframe your narratives, are calm, confident, unapologetic with your ways, know how to tell inspiring stories, then all these obstacles are just disguised opportunities. So the next time you face some tricky questions that come your way, let your journey speak louder than your failures. Wish you all the very best.